Hello student, how are you? Shri Satya Sai Kian Vidyalay. My name is Kajal. Today we are learning Grammar 2. Grammar 2 में second part subject and predicate. Let's learn. This is activity number 1. Meet Mr. Sentence. He is going to a party. He need to carry some sentence in his suitcase. Identify the sentence from the list and take them for a Mr. Sentence. Remember, Mr. Sentence need words that make a complete sentence. This is a Mr. Sense. He is going to a party. He needs to some carry sentence in his suitcase. Okay, so let's start. फर्स्ट सेंटेंस हमें ये देखना है कि ये कंप्लीट सेंस है या नहीं. सेंटेंस हमें पढ़ना है एंड आफ्टर डिसाइड करना है दिस इज कंप्लीट या दिस इज नॉट कंप्लीट. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ सीक्रेट ड्रैगन. आई हैव अ सीक्रेट ड्रैगन. ओके, आई सब्जेक्ट सीक्रेट dragon. Have verb. A secret dragon is a object. Yes, this is a and also full stop. Yes, this is a complete sentence. Yes, this is a complete sentence. Second, who is living in the tub? Who is living in the tub? WH question is a living verb. Very good. Verb living in the is living yani verb in the tub subject. Okay, yes, and after question mark, yes, this is a complete sentence. And third, it greets me. It greets me. It's also subject, greets verb, me object. And full stop. Yes, this is a perfect sentence. Gives my back a scrub. Gives my back a scrub. What gives? Subject, noun, pronoun, missing, not complete. So this is not a complete sentence. And fifth, Masha and her blanket. Masha and her blanket. Masha subject, her blanket and her blanket. This is not a complete sentence. Okay, this is a not. 6. Masha could not sleep. Couldn't sleep. Masha could not sleep. Masha is a subject, noun, couldn't sleep. Yes, on and also full stop. Couldn't sleep. Sleep yani verb. Verb is also object. Yes. Her bed was hard and pillow was big. Her bed was hard and pillow was big. Her bed was hard and pillow is a subject. Was verb. Yes, also verb. So this is and after full stop. Yes, this is a perfect sentence. Anansi was in a trouble. Anansi subject, was verb, trouble predicate. Yes, and after full stop, yes, this is a perfect sentence. Okay, Mr. Sentence bags are full for complete sentence. Okay, and after get set. The sentence is a group of words that make a complete sense. A sentence included subject and a predicate. Subject is the person
or thing that we are speaking about, it is generally placed at the starting of a sentence. Subject is a person or thing that we are speaking about. It is generally placed at the starting of a sentence. सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होना चाहिए, मीन्स दैट इज अ कंप्लीट सेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल सुमित ड्राइव्स अ कार, तो सुमित. ओके, आरती सिंग अ सॉन्ग, तो वो सब्जेक्ट हुआ ना, आरती. हमिद ब्रोक अ वास, हमिद इज अ सब्जेक्ट. व्हाट इज अ प्रेडिकेट? अ प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट. ओके, तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मोर अबाउट, उससे ज़्यादा है वो. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ट्रेन मूव फास्ट. सो ट्रेन इज अ सब्जेक्ट. मूव फास्ट, who's मूव फास्ट? ट्रेन. ओके, द ट्रेन. तो मूव फास्ट इज अ प्रेडिकेट. सेकंड, हर्षाली ड्रंक द जूस. who's drunk the juice? Harshali. Harshali is a subject, but who is a predicate? Drunk the juice is predicate. Shahid dance well. Who is a dance well? Shahid. Shahid is the subject. What is the predicate? Dance well. So the predicate must contain the verb. Subject plus predicate is equal to sentence. Okay. Verb means whom, what, whatever. Pick out the noun in a sentence. Okay. Find step number 1 to subject find out. Find out, हमें subject find out करना है. Pick out the noun in a sentence. इसमें हमें noun select करना है first. Second, found out which noun we are speaking about. किसके बारे में बोल रहे हैं, means predicate. You make ask what, whom to verb. The answer you get will be the subject. Okay. So Sunday is a holiday. Sunday noun, holiday also noun. Which one is focused more? Sunday. Okay. Ask what is the holiday? So answer Sunday is a holiday. That also asking the train move fast. Who is move fast? So train move fast. That's Activity number 2. Identify the subject and circle it with pink color pencil. Activity number 2 में हमें subject find out करना है और उसे pink color pencil से हमें circle करना है. Okay. Raju sent some flower. Who sent some flower? Raju. तो राजीव ऐसे. Okay. Second, Sonia come home late. Came Sonia. Okay. Arvind took the chocolate. Who's the talk to chocolate? Arvind. My pen fell off the desk. My pen is subject. A tiger is also called a big cat. A tiger. The car was spreading toward us. The car. Okay. 7. The Taj Mahal is one of the wonder of the world. The Taj Mahal. Okay. Activity number 3. Underline the predicate in the following sentence. यहाँ हमने subject find out किया और यहाँ हमें predicate find out करना है. Okay. Activity number 3, उसमें first सिमरन sent a letter. तो sent a letter. ओके. जो हमें सब्जेक्ट बोला होता तो सिमरन आता, पर हमें प्रेडिकेट कहा है तो sent a letter. आसिफ pass the ball. आसिफ pass the ball. Third, रोहिणी play guitar. The storm destroyed everything. Destroyed. The manager is late for the meeting.
द मीटिंग। ऐसे। एक्टिविटी नंबर 4, मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद देयर सुटेबल प्रेडिकेट। फर्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट। ये हमें मैच करना है। देखते हैं। फर्स्ट, फार्मर। द फार्मर fill his trunk with water? Oh no. Orbit the earth? No. Twinkle in the sky? No. Meet the ocean? No. Chips loudly? No. Shows the seed? No. Yes, the seeds. The farmer show the seeds. ऐसे हमें मैचिंग करना है। ओके। एंड सेकंड, द बर्ड्स chirps the loudly sorry ऐसे। and elephant fill his trunk with water। elephant and fill his trunk with water। and after, a mother and fourth, a mother में क्या आएगा? nurtures her child। ओके, nurtures her child। एंड फिफ्थ, स्टार में क्या आएगा? स्टार ट्विंकल इन द स्काई। एंड सिक्स, द मून ऑर्बिट द अर्थ। एंड सेवन, अ रिवर में क्या आएगा? मिड द ओशन। ओके, कंप्लीट हुआ ये। एंड आफ्टर क्लासरूम एक्टिविटी है, फिल द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स एज सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। डैश हेल्प्स एवरीवन इन अ क्लास। अगर आपके क्लास में कोई सबको हेल्पफुल मददफुल होता है, उसका यहाँ पे नेम लिखना है। डैश ड्रॉ द बेस्ट स्केचर्स। बेस्ट स्केच करता है वो। एंड आफ्टर, डैश इज द टॉलेस्ट बॉय। विच इज द टॉलेस्ट बॉय इन योर क्लासरूम? इज द फास्टेस्ट रनिंग स्टूडेंट। हु इज द फास्टेस्ट रनिंग स्टूडेंट? देयर नेम्स। डैश इज द स्मार्टेस्ट गर्ल। हु इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास? ओके, इसका ये आपका होमवर्क है। आपको होमवर्क करके इसकी फोटो आपको ग्रुप में सेंड करनी है। ओके। गोइंग बियॉन्ड, सब्जेक्ट मेडिकल डज नॉट ऑलवेज कम प्लेस्ड एट अ फिक्स पोजिशन इन अ सेंटेंस, बट वी कैन गेस द सब्जेक्ट ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ सेंटेंस केयरफुली। इसमें कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डज नॉट ऑलवेज कम प्लेस विद फिक्स पोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। हमको ऑब्जर्वेशन करने पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस केयरफुली हमें पढ़ेंगे तब हम ऑब्जर्व करके पता चल जाएगा कि विच इज सब्जेक्ट एंड विच इज प्रेडिकेट। फर्स्ट, tired and hungry, Omar reached a big house. Omar is a subject, tired and hungry is a predicate. In the 5th century, Emperor Babur found the Mughal Empire. Emperor Babur, subject, Mughal Empire. In 5th century, Mughal subject. Oh no, the child is locked in the car. Child is a subject, locked in the car is predicate. Okay, that's the complete our subject and predicate. If you have any query, any question, please ask me. Okay student, bye.